Because I have started recording from here, I should repeat it. This is lecture number 17. In this lecture, we will study about the buck converter, some derivation and the example. This is related with the example of example 5.3 from M.H. Rashid. These are the previous work. We know that the output of a buck converter is output is equal to KVS. So remember this value, and something we have shown you this previously. So we know that if this reference voltage is increased, the T on time will be increased, and the output voltage will be more. So it means T output voltage is proportional to the T on time, or output voltage is proportional to the duty cycle. T on time is basically the duty cycle. So you need to revise these things. And this is the example 5.3. Here the buck converter is shown, and the values, some values are given here. For example, this is the buck converter, and the supply voltage is given to you 550 volt. This is the transistor, but this one is MOSFET, probably it's the N-channel MOSFET, and this MOSFET is basically is a switch. So it operates at a frequency of 250 hertz, and the resistance value is given to is 0.25. Average load current is 200 amperes, and EMF value, I mean, this may be some DC value. This DC value is 0 volt. So while analyzing this circuit, we will ignore this voltage because this is assumed to be 0 volt. So we will ignore this one. Okay, this is the average output voltage of this converter. As we know, we have seen in the previous lectures that the output voltage basically fluctuates from minimum value to the maximum value, and here the average output voltage is given to you. Average load current is 200 amperes. So so load current is 200 amperes, but there is a ripple starting from I minimum to the I maximum value, and this ripple is denoted by delta I. This is your T on time. This is your T off time. We will soon see how T on time is equal to KT and how T off time is equals to 1 minus KT. So we will see here. First of all, it is asked that find the value of the inductor L that would limit the maximum load ripple of average output current to 10% of for the given circuit of buck converter. Average output voltage, average output current is 200 amperes. Excuse me. Average output current is 200 ampere, and it says that its ripple means delta I should not exceed 10% of 200 amperes. And what is the load ripple? So this ripple is acceptable 10%. 10% means 200 multiplied by 0.1. So the load ripple is 20 amps. So this fluctuation should not, delta I should not exceed more than 20 amps. And for this condition, we have to find the inductance value, find the value of the inductance. So as we know, more the inductance, more the output current will be smooth, means ripple will reduce. So we have to find out the value of the inductance in such a way. We have to find out the value of the inductance that ensures the ripple in the output should not exceed beyond 20 amperes. Okay, this is the task. So we have to find out. So now we are going to find out the value of the inductance L. We know duty cycle K is equal to T on upon T. And this, if you take this one, K is equal to point option. Yes. So we know this one. This is K. K is equal to duty cycle is equal to T on upon T. So if we find out the value of the T on is equal to KT. So T on is equal to KT. So now we know that T on is equal to KT and the total time is T. So how we can find out the T off?
T off is easy to find. We will subtract this value from the total value. So we will find out T off. So and T off is equal to total value is T. T में से हमने on का time निकाल दिया, minus कर दिया KT. So we will end up with the T off is equal to bracket 1 minus K multiplied by T. So T off is equal to bracket 1 minus K. So you should remember these values. So we have to find out the value of the inductance L. We know from buck converter that average output voltage is kVs. Yes, the output voltage of the buck converter equation for the buck converter is average output voltage is equal to kVs. Yes, this. Also from circuit, where is the circuit? Circuit is this one. So also from circuit we can find out the average output voltage is equal to IAR. How? Okay, this is the circuit and this is the average output voltage. So this average output voltage will be IA multiplied by R. Okay, V is equal to IAR. Okay, that's fine. Now we have to analyze for switch on. When the switch is on, this switch, if this switch is on, means this is short circuited. Okay, if this is short circuited, so what will happen? This diode will be reverse bias because this is plus, the supply is plus. If this is short circuited, so plus means this one, and this will be diode will be reverse bias, and the circuit will like this one. The circuit will energize the inductance and the inductor L. The operation of this we already have studied in the previous lectures. We studied the operation of this buck converter by splitting into two parts. Number one, when the switch was on, and number two, when the switch was off. So we don't want to repeat this one again. So for when the switch is on, means the inductor is going to energize, and the voltage across the inductor is, we know, VL is equal to LDI by dt. Okay. And from the circuit, from this circuit, we can also find the inductor voltage. This is the from the basic physics. VL is equal to LDI by dt, and this VL is from the circuit. So where is VL? VL is the voltage across this one. How we can find out the voltage across this one? We will, because the switch is on, so one end is directly connected with the supply voltage, and this other end is directly connected with the output voltage. So the voltage across this one is supply voltage minus this output voltage. So the inductor voltage is supply voltage minus VA, and because we also have this potential, so voltage across inductor will be supply voltage minus this voltage and this voltage. But so this can be simplified. VL is equal to VS minus VA is KVS. Here VA is KVS, and E is said to be ignored. So I have ignored this one, and if we do further simplification, so Vs is common, 1 minus K. This is equation number 2. And okay, we know that this KVS is from here. Now this is VL equation, and this is also VL equation. Okay, and this is the answer of this VL equation is this one. Answer of this VL equation is this one. So we can equate these two values. So if we equate these two values, LDI upon dt is equal to VS1 minus K. Okay. If you have any question, you can ask. So di upon dt is equal to VS1 minus K. This L will be in the denominator. This is equation number 3. The equation number 3 we already we have done just now. This one, equation number 3 is di upon dt Vs1 minus K divided by L, and this is basically, this is, you can say this is not a varying voltage. Sorry, it's not a this is just a straight line. So derivative can be changed to del I. It means this, the difference we can find out just by subtracting maximum value by the minimum value. So di upon, there is no need to have derivative equation, so we can make it simple.
by replacing di by del I, because we are assuming this one is a straight line, but in actual this will not be a straight line, please remember. So di is equal to del I, and what is dt? The change from minimum to maximum is done in this time period. So di is d and delta I, and this time period is t on. So the t on, this one. And we know that delta I, t on time, we know t on time is equal to kt. We have seen before, t on time is equal to kt. Okay. So here delta I upon kt, delta I upon kt. Why I have written once again? Okay, no problem. Ti upon dt maybe. So Li upon kt is equal to di upon dt is equal to basically Vs 1 minus k. So del I ये वैल्यू हमने यहाँ पर Vs 1 minus k. For the worst case, k should be supposed to be 0.5. As you have seen, we studied about the CCM mode of operation and the DCM mode of operation. We know the CCM mode of operation. In the CCM mode of operation, the current will just touch the zero value, and then it will start to increase or decrease. And the DCM is the operation where current stays at 0 ampere for a small amount of time. So for the CCM, the minimum condition to be in the CCM, the K can be 0.5 volt. No, sorry, I spoken wrong. This is for the worst case. Okay, K should be 50%. The worst case is K should be 50%. So del I upon KT Vs minus. इसे हमने दोबारा rearrange कर लिया. Del I is equal to this KT is here, Vs1 minus KL. And now place the value delta I is 20, K की value 0.5 है. The worst case scenario is 0.5, 50%. And T is, what is T? What happens to T? The T is not provided, but it is provided in the previous slide that the time period is not provided. Okay, but the frequency is provided. F is equal to 250 hertz. So we know frequency is equal to 1 over time. So here time is changed to 1 over F. 250, 550, 1 minus K. So we can find the value of the L. L is equal to 27.5 millihenry. It is the minimum inductance required to keep the current ripples down to 10% of IA. The output current ripple in the load R can be further decreased. ये ripples हम और कैसे decrease कर सकते हैं? अगर इस inductance की value को मैं और कम कर दूं, ठीक है? तो and low pass filter, we know we should remember these things. In order to remove further ripple, we can have low pass filter. This is just for the general information. You should know if someone say, please describe the DC-DC converter. So you should able to draw such type of a block diagram. It starts with 3-phase AC, and then we make a DC by using a rectifier. And this is unregulated DC. We can also connect a battery, and then we apply the filter capacitor. This is a still unregulated DC voltage, and then we apply a DC is the DC converter with a control voltage. This is the reference voltage, and then we can get the regulated DC voltage. This should able to draw if someone asks you. PWM, we have spoken about these things. Okay, so now it's time for the question answer, and to take the क्या कहते हैं इसको, attendance. How many are there? It's only attendees are 10, and
Out of 10, 1, 2, 3 are only active. Okay, anyway, I have to take the attendance. So download attendance list. Okay, I have downloaded. Now the question answer is 001. Who is 001? Yes, sir. What's your name, please? Mujibur Rahman. मुजीबुर रहमान. काइंडली आप ये बताएंगे कि अभी हमने इस लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी हैं, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया या क्या हमने किया है? सर हमने इसमें ये बक कन्वर्टर की एग्जांपल की है 5.3. इसमें सर हम ये फाइंड कर रहे थे कि हमारे पास जो एवरेज लोड करंट आ रहा है ना, उसकी जो रिपल्स है वो मैक्सिमम आ रही है. तो हमने जो है ना इंडक्टर की वैल्यू फाइंड करके इस जो लोड एवरेज रिपल करंट है इसको मिनिमम करना है. उसमें हमें कंडीशन दी है कि जो 200 एम्पेयर है उसका हमने 20% ले लेना है. गुड, तब जाके हमारे पास इंडक्टर की जो गुड, वैल्यू ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान साहब. अच्छा, ये कौन है? 035 व्हाट्स योर नेम प्लीज? 035 Okay, you're not here. And 059, are you here? 059. Yes sir. Yes अच्छा, sir. आपका स्टेटस पे फिर वो क्यों आ रहा है, ब्लैक क्यों आ रहा है? Looks like that 059. I don't know. Anyway, if you are here, it's okay. Yes, 059. What's your name? Sir, Mohammad Fazil Raja. मोहम्मद फजील राजा. गुड. मोहम्मद फजील राजा, आपसे सेम क्वेश्चन है. ये बताइएगा कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? सर कौन सा लेक्चर? अभी जो हमने लेक्चर दिया, आप सुन रहे थे? सर मैं भी आया हूँ, सॉरी. अभी आए, अच्छा. तो यार ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना फजील. सॉरी सर, असल में पिछली पता दफे ही भी मुझे याद पड़ता है कि वो जो है ना, तुम और औसाफ, इन लोगों ने ये दे वर नॉट सीरियस. लास्ट ईयर शायद हमने, मुझे चूंकि नाम अब याद आ रहा है, तो औसाफ और फजील दे वर नॉट सीरियस. सो प्लीज ट्राई टू बी सीरियस. ठीक है. ओके सर. हु इज 071? यस सर, इबाद है. नाम? इबाद है. इकबाल. अच्छा, द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू. आप ये बताइए कि ये यहाँ पर एवरेज आउटपुट करंट कितना था? सर 20% था. एवरेज आउटपुट, रिपल नहीं पूछ रहा हूँ, एवरेज आउटपुट करंट पूछ रहा हूँ, कितना था? सर नो आइडिया. स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना मेरी? सर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा, वाइट आ रहा है बस. अच्छा, ओके. अच्छा, हाँ, वाइट इसलिए आ रहा है कि ओके, फाइन. टू गो बैक. ये देखें, क्वेश्चन क्या था? ये था. तो ये क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस L that would limit the maximum load ripple of average output current to 10% for the given circuit of buck converter. So given इसमें जो एवरेज ये है ग्राफ आपका 200 एम्पियर था, और इसमें हमें ये जो लिमिट करना था 20%, सॉरी 10%, मींस 20 एम्पियर से ज्यादा ये. तो वी हैव डिराइव्ड by setting the del I equals to 20 एम्पियर, और हमने L की वैल्यू, मिनिमम इंडक्टेंस L की वैल्यू हमने फाइंड आउट की. ओके, गुड. नेक्स्ट 071 हो गए. 074. यस सर, मोहम्मद रिजवान. मोहम्मद रिजवान. अच्छा, ओके, गुड. आप ये बताएं कि जो फ्लक्चुएशन था इसमें आउटपुट ट्रिपल में कितना था? सर कितना लेकर हमने 10% तक उसको लिमिट करना था.
हाँ जी, कितना बना था 10%? सर 10% हमारा 200 का 20% 20 एम्पेयर बना। ओके गुड, थैंक यू थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट इज 074 हो गए, 084। यस सर। नाम बता दिए प्लीज। वजाहत अली। वजाहत अली, वजाहत अली, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये कि इस अभी जो लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ा है? सर इसमें हमने बक कन्वर्टर की एग्जांपल्स पढ़ी हैं सर, और ड्रॉबैक। सो रहे थे? मुश्किल टाइम तो है, नो डाउट, रमजान का महीना है। सर ब्लॉक और डायग्राम देखिए डीसी डीसी कन्वर्टर्स की। और सर प्रॉब्लम ड्रॉबैक ऑफ प्रॉब्लम हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है? सर ये बक कन्वर्टर का प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या था? सर इसमें सर हमने ना ड्यूटी साइकिल। अच्छा चलें, तो थोड़ा सा आप अटेंटिव नहीं थे, नेक्स्ट टाइम के लिए अटेंटिव हो जाए। और ओके सर। सेक्शन 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 ए बी, सेक्शन बी सेक्शन का ए। जो वीडियो है ना, वो भी यस मैंने सर। आपके साथ शेयर किया है, वो भी देख लें, तो ओके प्रॉब्ली सर। ये मसला हल हो जाएगा। जो आपने नहीं सुना आज का लेक्चर, तो प्लीज ट्राई, ठीक ओके है। सर। और नेक्स्ट टाइम से जरा टाइम पे आए, 10 मिनट 5 मिनट पहले आ जाए। मोहम्मद जहाँ से सर असल में वो पता नहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी, कनेक्ट नहीं हो रहा था, साइनिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से फिर कोको मुजीब ने मुझे लिंक भेजी, तो इसके बाद फिर ज्वाइन हो गया था मैं। अच्छा चलें, आज तो फर्स्ट था ना, और यस सर। आपको आसानी है कि वो सेक्शन बी का भी आपके पास पीडीएफ भी है, और क्या कहते हैं, वीडियो भी है। ये यस वाली सर, वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है सर। तो आप शायद इस जो डिफिशिएंसी हुई है आज के लेक्चर में, प्रॉब्ली यू विल कवर। मोहम्मद जहाँ से यस सर। जी, जहाँ से आपने लेक्चर सुना पूरा? नहीं सर, लेट ज्वाइन किया था। लेट ज्वाइन किया था, अच्छा। तो अभी आप ये स्लाइड आपको नजर आ रही है? यस सर, आ रही। स्लाइड को आप देखें, फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके पास आता हूँ। ठीक है स्लाइड सर। में क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, क्या है क्वेश्चन, फिर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। नईम अहमद जलाली खान जी, द सेम क्वेश्चन विथ यू, ये फ्रॉम यू के ये आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा है? सर हमने अपना एग्जांपल पढ़ी है बक कन्वर्टर की ना, लोड इंडक्टेंस को लिमिट करने के लिए सर, ताकि जो हमारे पास जो लिमिट से मतलब जो मैक्सिमम आती है उसको मतलब हम लिमिट करके एक मतलब पर्टिकुलर परसेंटेज पे ले आए, ताकि हम उसकी मतलब जो ठीक है, वैल्यू गुड। हमारे पास निकल जाए। पर्टिकुलर का मतलब क्या है? यहाँ पर कितना था पर्टिकुलर? तो सर 10% था ना। 10%, that means 20, but that's good. Thank you नईम अहमद। अच्छा, औसाफ अली खान, यस सर। इस दफा आप एनिमेशन तो नहीं कर रहे? पिछले नहीं साल नहीं आपने नहीं प्रश्न किया सर। था यार, आपने और फजील राजा, इन दोनों के नाम मुझे याद है अच्छी तरह यार। अच्छा एनीवे, तो वो पुरानी बात थी, अब कोई उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये बताइए कि आपने लेक्चर अटेंड किया जी पूरा? सर। जी सर। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये अगर हम इस रिपल को और कम करना चाहेंगे तो क्या करना होगा? सर अगर हम इस रिपल को और कम करना चाहेंगे तो इसका टी ऑन कम कर देंगे। नहीं, कुछ और बताएं। सर इसमें तो हमें 10% दिया हुआ है ना अभी, तो फिलहाल तो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 10% गिवन है, यानी कि यहाँ पर गिवन ये है कि जो रिपल है तो 20 एम्पियर तक होगा, एक्सेप्टेबल जी है। जी सर। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है कि 20 एम्पियर के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू हमने कितनी निकाली, शायद 27 पॉइंट समथिंग मिली 27.5 मिली हेनरी। हेनरी, गुड।
अब आपसे कोई ये कहता है कि भाई मुझे 20% रिपल बहुत ज्यादा है, मुझे 10% सॉरी 20 एम्पियर रिपल बहुत ज्यादा है, मुझे 10 एम्पियर रिपल चाहिए, तो व्हाट यू विल डू? सर इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, किसकी वैल्यू को? करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू को नहीं, सर इंडक्टर की इसमें वैल्यू को बढ़ा सिंपल देंगे सर। इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही नईम ने बताया कि इंडक्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो उसामा अली खान थोड़ा सा देखें, ये चीजें बड़ी इजी हैं, इतना मुश्किल नहीं है, और आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो थोड़ी बिल्कुल थोड़ी सर। सी एफर्ट कर लें, ठीक है साहब। ओके, ठीक है सैफ सर। हुसैन, सैफ हुसैन। यस सर। जी सैफ हुसैन, इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने से क्या होता है? सर आप ही ने तो अभी सवाल किया कि अगर आपको रिपल कम करना है और कम करना है तो फिर आप इंडक्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा दें। वेरी गुड। तो आपका भी, मैंने तो बताया कि तो आपका भी यही जवाब है सर इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से रिपल कम हो जाता है ना? यस सर, यही जवाब। एग्जैक्टली, इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से रिपल कम हो जाता है, बिल्कुल सही। तो आपका भी यही जवाब है कि अगर रिपल मजीद कम करना है तो इंडक्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, सही है। अच्छा याद रहे, एग्जाम में इस तरह आ सकता है कि यहाँ पर गिवन कितना है, 10%, दैट इज 20 एम्पियर रिपल इज अलाउएबल। एग्जाम में आ सकता है कि भाई अब मुझे आपको 20 एम्पियर नहीं बताया जाएगा, हो सकता है आपको ये बताया जाए कि 10 एम्पियर का रिपल जो है वो एक्सेप्टेबल है। आप गारंटी इंडक्टेंस सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इन सच अ वे कि output ripple should not exceed beyond 10 amperes. So probably if you understand this example, तो आप ये हल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, नईम नईम अहमद जलाली खान साहब, ऐसा है कि यस आज सर। की अटेंडेंस बड़ी पुअर रही है, ठीक है ना। तो अब तक मुझे सिर्फ 11 नजर आ रहे हैं, सर थोड़ा सा सर ये। सर मैं हाँ जी, हाँ जी। आपको बता दूं सर, बच्चों के पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का बहुत ज्यादा इशू होता है, कभी लॉगिन अच्छा, नहीं हो पाता, कभी लॉगिन हो जाता है। आप काइंडली जूम पे कर लें तो बेहतर रहेगा। मैं जूम में कर लूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जूम में ज्यादा प्रॉब्लम है, पता है। क्या सर? जूम जूम में ज्यादा प्रॉब्लम इन द सेंस है कि वो एक तो 20-30 मिनट के बाद वो लिखते तो है 40 मिनट, अक्सर 30 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है, तो उसमें दोबारा आपको कट इन होना पड़ता है, उसमें काफी टाइम ज़ाया होता है। वैसे देखें, ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है ना, ये हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू है, तो ठीक इसकी स्पीड का इशू नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप लोग की जूम में स्पीड है तो माइक्रोसॉफ्ट में भी स्पीड अच्छी होगी। इसमें जो है ना, इस तरह आसानी। दूसरी चीज इसमें बहुत सारी अच्छी चीज ये है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड ईमेल है, आप उसके थ्रू लॉग इन होते हैं, आपको अटेंडेंस लेने में आसानी हो जाती है। जूम ठीक हो गया में सर। फ्री एक्सेस है ना, जूम में फ्री एक्सेस है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप कोई ठीक। भी 100 बंदा ज्वाइन कर ले, 10 बंदे ज्वाइन कर ले, किसी और नाम से ज्वाइन कर ले। उसमें ठीक है प्रॉब्लम ये सर। होती है कि कोई डोनाल्ड ट्रंप लिख देता है, कोई बाइडेन लिख देता है, कोई कुछ लिख या देता सर है, इसमें कोई वो ओसामा बिन। कोई गेस्ट के नाम से उससे नहीं आ सकता ना, मतलब समझ गया मैं आपकी हाँ, बात। अगर गेस्ट तो आएगा भी ना तो मुझे नजर आ रहा होगा गेस्ट में, तो इसमें थोड़ी ठीक सी सर। सेफ्टी है। तो और सर आई डोंट थिंक कि ये स्पीड का इशू है। सर वो जो प्रोवाइडेड ईमेल है उससे लॉगिन हो रहे हैं ना, तो सर वो बोले सेशन एक्सपायर लिखा हुआ आ रहा है सर, अब उसको किस तरीके से हल करें? सेशन एक्सपायर का, अभी आप एक काम करें ना, आउट करके ऑन करें, या सर ऐसा वो होना नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता यार, सर मुझे इसका। मुजीब मुजीब ने मुझे लिंक भेजी थी तो मैंने ज्वाइन की थी, वैसे तो अपने प्रोवाइडेड ईमेल कितने बजे की बात है? पासवर्ड। यस सर। ये जस्ट स्टार्ट मीटिंग जब मैंने स्टार्ट की तो उस वक्त की बात है। नहीं सर, ये बात की बात है जब मैं लॉगिन करा था ईमेल से, ये जो हम्म यूनिवर्सिटी वाली जो ईमेल है ना, उसमें हम्म बोले कि सेशन एक्सपायर है, आप अपने ऑफिस से रब्ता करें।
हो सकता हो कि उस वक्त अगर ये मुझे नहीं पता किस टाइम पे आपने किया था, ऐसा हुआ था आज सुबह के वक्त कि पहले मैं अपने दूसरे लैपटॉप से ऑन हुआ था, तो उसके अंदर MS Team इंस्टॉल नहीं थी, तो उसकी जो वो आ रही थी ना, क्या कहते हैं, ऑप्शंस वो डिफरेंट थे, तो मैंने उसको फिर जल्दी से उस सेशन को कैंसिल किया। फिर मैं दूसरे लैपटॉप में जिसमें ऑलरेडी हर चीज कॉन्फ़िगर है, तो मैं उससे ऑन हूँ। अगर इस टाइम पे आप आए होंगे तो उसमें यकीनन लिखा हुआ आ रहा होगा कि सेशन जो है ना आपका एक्सपायर हो गया, या ओके सर। तो प्रॉब्ली इस तरह की, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ तो आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आता। देखिए सेक्शन बी वालों की तकरीबन 100% अटेंडेंस था। मैंने जुमरात के दिन सेक्शन बी वालों क्लास दिया था इसी MST में, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आप इसी को कंटिन्यू करें। सर एक इशू ये भी है कि बच्चों को मालूम नहीं था कि आज क्लास थी, तो वो तो मैं पता नहीं 4 दिन जुमरात के दिन से मैं शोर कर रहा हूँ यार। नहीं सर सेक्शन ए वालों को नहीं मालूम था, तो जो बच्चे सुबह सुबह उठे थे तो वो भी आ सके, इसी वजह से वो बच्चे आ सके, बस बाकी बच्चे अच्छा, मतलब जो उठा हुआ था वो आ गया। कोशिश करें एक दफा और कर लें, MST में नहीं होगा ना, तो नहीं फिर आप मुझे बताइएगा, फिर मैं जूम में कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे लोग मौजूद हों। तो नेक्स्ट टाइम फिर कल हम इसी MS Team पे करेंगे, 5 मिनट पहले आ जाएं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल सेलेक्ट MS जूम पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो सर। जी सर किस टाइम क्लास सर कल, हाँ कल क्लास होगी एज पर टाइम। सर कल हमारी क्लास तो सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई है सर। कल है अच्छा बात सुने, अगर आप लोग क्लास का टाइम अगर चेंज करना, लेकिन कल आपके पास मॉर्निंग में 8 से जी सर 8 से लेकर 9:30 तक, तो एक ऑप्शन ये है कि 8 से 9:30 तक आप लोग कर सकते हैं, या अगर आप लोग कलेक्टिवली ये समझते हैं कि नहीं जी कोई और टाइम देना आपको फ्री है, तो आई कैन ऑल्सो मैनेज दैट वन, लेकिन बेहतर यही है इसी टाइम पे कर लें, क्योंकि फिर दूसरे टीचर का इशू आ जाएगा। सही है, सर नहीं सर हम पहले करवा देंगे, अगर कोशिश हुई ना 7 बजे करवा देंगे क्लास को, अगर हो सका तो। 7 बजे क्योंकि यार मैं तो नहीं अवेलेबल हूँगा, मैं तो सो रहा होता 7 बजे। अच्छा चलो ठीक है सर, ठीक है। या आप अगर बात सुने, अगर आप चाहें तो फजर की नमाज के बाद करना चाहें तो करवा लें। हाँ ऐसा कर सकते हैं, चलो सर मैं बताता हूँ आपको जैसा भी होगा। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल टाइम है, कल जो क्लास होगी वो 8 से लेकर के 9:30 9:30 तक होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर। सर